Hello, my dear students. I welcome you all in the third semester of BTech Mechanical Engineering at Aravali College of Engineering and Management, Faridabad. The name of this course is Strength of Materials, and the code assigned by the university to this subject is PCC ME 203. The full form of SOM is Strength of Materials. And my name is Reshu Sharma, and I will teach you this subject in this semester. Basically, in this video, we are going to discuss whole about this syllabus, the credit assigned to it, and what are the chapters we are going to study, what are the level difficulty levels of the different units, and this is all about your facilitator, about me. My name is Mr. Reshu Sharma, and I worked as an assistant professor in Department of Mechanical Engineering at Aravali College of Engineering and Management. I am pursuing my PhD, completed MTech in Manufacturing Technology and Automation from JC Bose University of Science and Technology, YMCA, Faridabad. I have 2 years of industrial experience and 2 years of teaching experience, and these are some of the exams qualified by me. These are some small achievements. Now, in this video, we are going to discuss in detail about the credit assigned to it and the total whole course content. See, the total credit assigned to this SOM subject is 4. The total credit assigned is 4, and the evaluation of this course can be done by two ways. One is internal assessment and second is the external assessment. The internal assessment carries your sessional part, means it is of 25 marks, and the external assessment is done by the university. External assessment is done by the university by taking external end semester examinations of 75 marks. So the total weightage of this subject is, total marks of this subject is 100 marks, and the duration of the final semester exam is of 3 hours. So this is all about the credit of this subject. Now we are going to discuss about the unit 1. What is in this unit 1? The unit 1 contains the deformations in solids, about Hooke's law, stress and strain tension, compression and shear stresses, various elastic constants and their relationship, elastic constants, Young's modulus, bulk modulus, and shear modulus, their relationship between all these three elastic constants, and mu also, Poisson's ratio, then volumetric, linear and shear strains, then the principal stress and principal planes, and then Mohr's circle. Basically, this unit 1 contains two chapters. In these two chapters, the first one completed at up to shear strain, and the next part is principal stress and principal planes and Mohr circles. So these are two chapters combined by the university in a single unit. So this chapter is not new to you. You all are already studied it in 11th class, where you have studied about the solid, liquid, gases, and the various stress strain diagrams for mild steel, various limits, proportional limit, yield point, ultimate point, breaking point, all these things you have studied. So we are going to discuss in details here. This is our unit 1. Now we will see the unit 2. Unit 2 contains shear force and bending moment diagrams, means the loading analysis of any structure can be done in this chapter. We will see the various types of beams and what are the various types of loadings on that beams. Then we will draw the shear force and bending moment for them. We will also discuss the beam spots, मीन्स कि जो हमारे बीम है उनको कौन कौन से टाइप के स्पॉट्स मिलते हैं. मीन्स सिंपली स्पॉटेड है, ओवर हैंगिंग बीम्स है, कैंटिलीवर बीम्स हैं, ये वेरियस टाइप्स ऑफ बीम्स हम स्टडी करेंगे. तो यहाँ तक मेरा एक यूनिट कंप्लीट हो जाती है. इसके अंदर भी यूनिट 2 भी क्या है, कंबाइन की गई है.
Then we will see the theory of bending of beams. This is your next unit, bending theory of bending of beams, bending stress distribution and न्यूट्रल एक्सिस. ये मेरी अपने आप में एक सेपरेट यूनिट बनती है. देन द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन. शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एक अपने आप में एक सेपरेट यूनिट बनती है. तो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो दिस यूनिट 2 कंटेन्स 3 चैप्टर्स इन इटसेल्फ. 3 चैप्टर्स. So we will study all these units in details as per time allows. Now our next unit is moment of inertia about an axis and polar moment of inertia. ये जो आपका जो टॉपिक है ये हम ऑलरेडी 11th क्लास में स्टडी कर चुके हैं, और साथ साथ जो हमारा एक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट है उसके अंदर भी हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे. लेकिन क्योंकि रिक्वायरमेंट अपने इस सब्जेक्ट की भी है, तो हम कुछ हद तक कोशिश करेंगे कि 1 या 2 लेक्चर में इसको हम अपने इस सब्जेक्ट के साथ भी कवर करने की कोशिश करें. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ द डिफ्लेक्शन ऑफ ए बीम यूजिंग डबल इंटीग्रेशन मेथड्स. देखिए, कोई भी एक बीम है, जब उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स की लोडिंग हम अप्लाई करेंगे, देन द डिफ्लेक्शन विल क्रिएट, देन डिफ्लेक्शन विल जनरेट. Now we have to find out the deflection by various methods. We have a lot of methods to find out the deflection. Then one of the method is double integration method and Maxwell's reciprocal theorem, and then the computation of slopes and deflections in beams. Now we will also discuss Macaulay method in this chapter. Macaulay method we are also going to discuss in this unit, and Maxwell's reciprocal theorem, Castigliano theorem we are going to study in this unit. So this is all about your unit 3. Now we will see what is in unit 4. What is this unit 4? The unit 4 contains torsion, stress and deformations in circular and hollow shafts. मीन्स आपकी जो भी आपकी सर्कुलर हैं वो सॉलिड और होलो शाफ्ट्स हैं, उनके अंदर डिफरेंट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कैसे कैसे स्ट्रेस, कौन से स्ट्रेस जनरेट होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर स्टडी करेंगे. देन द स्टेप्ड शाफ्ट्स मीन्स शाफ्ट्स विद डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस. मीन्स एक शाफ्ट का कुछ लेंथ का पोर्शन है जिसके अंदर उसका डाया 100 mm है, तो कुछ आगे समथिंग लेंथ है जो उसी के साथ अटैच है जिसका डाया 50 mm है. इस टाइप की जो शाफ्ट्स हैं उसको हम स्टेप्ड शाफ्ट बोलते हैं. देन द डिफ्लेक्शन ऑफ शाफ्ट्स फिक्स्ड एट बोथ एंड्स. मीन्स जो भी एक मेरी शाफ्ट है, अगर उसको मैं बोथ एंड्स पे फिक्स कर देता हूँ तो उसके अंदर किस टाइप का डिफ्लेक्शन जनरेट होता है. मीन्स ये कि वही केस है, लाइक एक फिक्स्ड बीम की बात करते हैं, उसी टाइप से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं. मीन्स आपके जो बोथ एंड्स हैं आपने उस शाफ्ट्स के क्या कर दिए हैं, फिक्स कर दिए हैं. देन उसके ऊपर क्या डिफ्लेक्शन जनरेट होगी जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग लगाएंगे, तो वो केस है मेरा किसका, डिफ्लेक्शन ऑफ शाफ्ट्स फिक्स्ड एट बोथ एंड्स. नेक्स्ट इज द स्ट्रेस एंड डिफ्लेक्शन ऑफ हेलिकल स्प्रिंग्स. मीन्स यहाँ तक एक मेरी शाफ्ट की यूनिट थी और ये मेरी एक सेपरेट यूनिट है जिसके अंदर कि आपको हेलिकल स्प्रिंग्स के बारे में मीन्स सबसे पहले तो जानना है कि स्प्रिंग क्या है, उसकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ क्या होंगी, एंड देन वी विल डिस्कस व्हाट इज़ दिस हेलिकल स्प्रिंग. इसकी जो हेलिकल स्प्रिंग है इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या इसके अंदर जो इसकी डिफ्लेक्शंस आती हैं, क्या क्या इसकी इसकी स्टिफनेस कितनी होती है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे हेलिकल स्प्रिंग के बारे में स्टडी करेंगे. तो यूनिट 4 ऑल्सो कंटेन्स 2 चैप्टर्स. वन इज़ टोरोजन एंड द सेकेंड इज़ हेलिकल स्प्रिंग. नाउ आवर लास्ट यूनिट is our unit 5. The unit 5 contains axial and hoop stresses in cylinders subjected to internal pressure. Means जो भी आपके हमारे cylindrical objects हैं, thin cylindrical objects हैं, उसके अंदर axial और hoop stresses जो generate होते हैं when some internal pressure is applied to them, उनको हमने analyze करना है. Now the deformation of thick and thin cylinders means यहाँ पे भी जो आपके सिलेंडर्स हैं वो इट मे बी थिन और इट मे बी थिक. देन द डिफॉर्मेशन इन स्फेरिकल सेल्स सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर. मीन्स जो कि इस चैप्टर के अंदर एक अच्छे से सिलेबस को मेंशन नहीं किया गया है, तो अगर मैं कुछ बात करूं यहाँ पे, तो यूनिट 5 ऑल्सो कंटेन्स 2 यूनिट्स. वन इज़ थिन वेशल्स एंड नेक्स्ट इज़ थिक वेशल्स. या फिर मैं अगर बात करूँ thin pressure vessels and thick
प्रेशर वेसल्स, थिन प्रेशर वेसल्स एंड थिक प्रेशर वेसल्स। तो वहीं पे हमारे दो केस आ जाएंगे, दोनों ही केसेस के अंदर, एक सिलेंड्रिकल और एक स्फेरिकल। तो हमें वो सारी चीज़ें डिस्कस करनी है यहाँ पे। तो ये क्या थी कि हमारी टोटल ये भी 2 यूनिट्स कंटेन हैं। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज़ द रेफरेंस रीडिंग्स, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी in this for this subject. We are going to follow some books like Igor P. Popov, then R. Subramaniam, and Johnson. These are three reference books which we are given in our syllabus. But we will also discuss some separate books. We will also study it from books like S.S. Ratan, then साधु सिंह है, देन D.S. कुमार है, R.K. राजपूत हैं। ये सारी बुक्स भी हम फॉलो करेंगे। एक बुक है मेरी टीमोसेंको एंड गैरे, हम उसको भी रेफ़र करेंगे। जितनी कोशिश हो सकती है बुक्स को हम रेफ़र करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उनकी क्लियरिटी आपको ज़्यादा अच्छे से मिल पाए। नाउ what is the course objective? What is the objective of this course? The course objective is to understand the nature of stresses developed in simple geometries such as bars, cantilever beams, shafts, cylinders and spheres for various types of simple loading. Next, to calculate the elastic deformation occurring in various simple geometries for different types of loadings. So these are our course objectives. Now वी विल डिस्कस व्हाट इज़ द कोर्स आउटकम्स। मीन्स इतनी सारी यूनिट स्टडी करने के बाद हमारे आउटकम्स क्या निकलेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। हम अगर ये सब्जेक्ट में स्टडी कर लेता हूँ तो मेरे को किस चीज़ की नॉलेज हो जाएगी, वो है मेरे कोर्स आउटकम्स। सो टू रिकॉग्नाइज नेचर ऑफ इंटरनल स्ट्रेसेस दैट विल डेवलप विद इन द कंपोनेंट्स। Second has to evaluate the strain and deformations that will result due to the elastic stresses developed within the materials for simple type of loading. Next, to make out concept of moment of inertia. Then the analysis of torsion of various shafts and the analysis of axial and hoop stresses. So these are our course outcomes. Now, what is this course evaluation methods? Since हमारी जो क्लासेस हैं, ऑल द क्लासेस आर गोइंग टू बी ऑनलाइन, देन द कोर्स आपका जो इवेल्यूएशन होगा, जो भी इंटरनल असेसमेंट होगा, जो 25 मार्क्स की जो मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में, जो भी इवेल्यूएशन है वो भी हम ऑनलाइन करेंगे। और ऑनलाइन मेथड्स क्या होंगे? द ऑनलाइन मेथड्स में बी योर ऑनलाइन क्विज, मे बी योर MCQs, and we will provide you online assignments and you have to submit it also online. So the methods are online quiz, MCQs एंड ऑनलाइन असाइनमेंट्स। एंड अगर कोई और इन्फॉर्मेशन हमारे पास यूनिवर्सिटी की साइड से आती है, देन वी विल ऑल्सो डू दैट वर्क। नाउ what is the responsibility of the students? The students are required to perform in these online tests with their maximum capability to secure good marks in their internal assessment. So this is all about your course of strength of materials. My dear students, this course is very basic course for the various designing subjects which you are going to study in your upcoming semesters. So you have to study this subject in very detail and with conceptual clarity. अगर आपके यहाँ पे concept clear है तो as an engineer you are if you want to become a design engineer in your future, then you have to be a very good knowledgeable person of this subject. So this is my request to you कि make your concepts very much clear from the very beginning. So this is to the end of this video. I am very thankful to all of you and I hope you will stay safe at your home and follow the social distancing and keep you and your family safe. Thank you very much.